श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। Welcome my elders, brothers, sisters, young ones and children. This is original Sri Rama Katha, Välmiki-Rāmāyaṇa, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. भगवान श्री राम की जय हो। जय श्री राम। बालकांड, दिस इज एपिसोड नंबर 42 एंड Canto 62। 62वां सर्ग हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तक के सभी एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ये रामायण वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हिंदी अनुवाद की अलग रामायण हो चुकी है, गुजराती अनुवाद की भी हो चुकी है, और ये इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन फ्यूज़न फॉर्म चल रहा है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं। कल से बच्चों की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। फिजिक्स का पेपर है, 12 साइंस में। सबको बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम। टेंशन ट्राई योर बेस्ट, मेरा तो एक ही सूत्र है सबके लिए, ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आप अपने से बनता अच्छा प्रयत्न करिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जय श्री राम। 62वां सर्ग, 62तमः सर्गः। विश्वामित्र द्वारा सुनह सेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। ऑन रीचिंग पुष्कर while Ambrish is taking rest, Sunasep approaches Vishwamitra, who was practicing austerities there, and inquire of him men escaping death without meeting with the king's opposition, whereupon Vishwamitra teach him a prayer each for propitiating Indra and Lord Vishnu respectively, by reciting which the boy secure release from Ambrish's bondage, and the later gets the reward of the sacrifice without sacrificing him. सतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनहसेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहाँ विश्राम करने लगे। Taking Sunasep with him was well among men, the highly illustrious king Ambrish, for his part reset at Pushkar at noon, O season of Raghu. श्री राम जब वे विश्राम करने लगे, उस समय महायशस्वी सुनहसेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख और प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनिपुंगव, न मेरे माता है न पिता हैं,
फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं? मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। Making his way to the elder main Puskara, there being two other lakes in the vicinity of the main lake known as the middle and the younger Puskara respectively, the while later was taking rest, the highly renowned Sunasep, so the tradition goes, showed his maternal uncle. It has already been mentioned in verse 7, Canto 34 that Vishwamitra had a sister, Satyavati by name, who was given a marriage to Richika. It was of the Satyavati that Sunasep was presumably born. Vishwamitra practicing austerities with other sages, pulling a long face and looking miserable from thirst or desire to live and fatigue, the boy who was sore afflicted sank into the sage lap, O Ram, and spoke as follows. So it is said, there is no mother or nor father to me. How then could there be any kinsmen or relations? नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक प्राप्त कर लूँ, ऐसी कृपा कीजिए। Be pleased to deliver me, O gentle sir, in the name of pity, O dwell among sages, for you are the redeemer of all as well as their benefactors. Pray so arrange that the king Ambrish may realize his object in the shape of a reward of his projected sacrifice, while I may be saved from death and attaining a long life and practicing austerities ascend to the celestial plane, the highest of all the three worlds. धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझे अनाथ के नाथ, असहाय के संरक्षक हो जाइए। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। With a cheerful mind, indeed, by you celebrated as you are, a protector to me, a forlorn child, you ought to be protect me, O pious soil, against adversity born of sin, even as father protect his son. सुनसेब की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले। बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस परालौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। Hearing the aforesaid prayer of Sunasep and consoling him in many ways, the great ascetic Vishwamitra spoke to his own son as follows. So it is said, the time has just come for ensuring our good in the other world, for which father desire of blessing beget son. बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस परालौकिक हित के उद्देश्य से पुत्र को जन्म देते हैं, उसी की पूर्ति का यह समय है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है, तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। The son of the hermit, who is yet a child, seek deliverance through me. Do him a good turn, my dear son, by merrily parting with your own life. तुम
सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। You are all engaged in a virtuous act and are all devoted to duty, taking the place of a victim at the sacrificial performance of the king Ambrish. Afford satisfaction to the god of fire. इससे सुनहसेब सनात होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा, देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरे यज्ञ आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। In this way, not only will Sunaseb find a protector in us and secure deliverance from death, but the sacrifice of Ambrish will also completed without any let or hindrance. Nay, the gods will have been propitiated and my pledge, so security given to him redeemed. नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुच्छ आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्तों का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरों के पुत्रों की रक्षा के कार्य को हम अपना कर्तव्य कोटि में ही देखते हैं, अकर्तव्य की कोटि में देखते हैं। Hearing the aforesaid exhortation of Vishwamitra, whose dwell among men, his son, of whom Madhuchandana was the eldest, proudly and lightly replied as follows, how it is that you proceed to save the another son, parting with your own son, O almighty sage, we reckon this attempt of yours to be almost as sacrilegious as the mixing the flesh of the dog in one's dish. उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, Hearing the aforesaid command of his above named son, Vishwamitra, as well among sages, proceeded to curse them as follow. His eyes bloodshot through anger. अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्तों का मांस खाने वाले मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहोगे। This reply given by the disregarding my exhortation is interpreted, nay divorced from pity, sharp and shocking too. Like the son of Vasishtha, therefore you shall be born on earth among the low-born class, such as the Chandal and the Mustik, and living on the flesh of dogs, drag your watched existence for full 1000 years. इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनहसेब की निर्विघ्न रक्षा करके उसे इस प्रकार कहा, Having subjected his son to a curse of as aforesaid, Vishwamitra, the foremost of the hermits, then spoke to the watched Sunasep as follows, ensuring protection free from disease to him by means of mystic spell. हे मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर
लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। Scrambling to the sacrifice post, scared to Lord Vishnu when you have been bound with cords of darbha grass and adorned with a Vadh of crimson flower and bed you bed with red sandal paste for being offered as a victim at the sacrificial performance of King Ambrish. Glorified through the scared fire Indra and Lord Vishnu by the means of glorious addressed to them, and then you would do well to chant the two excellent psalms invoking the two aforementioned deities, which I am presently going to teach you, O dear son of sage Richika. Thereby you will attain your object in the shape of deliverance from death at the projected sacrificial performance of King Ambrish. सुनरसेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजा सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, Learning the aforementioned couple of slums as taught by the Vishwamitra, with a fully concentrated mind, Sunasep hastily spoke to the said King Ambrish, a lion among kings, as follows. हे राजेंद्र, परम बुद्धिमान राजा सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले। आप आज्ञा की यज्ञ की दीक्षा ले और यज्ञ कार्य संपन्न करे। O highly intelligent monarch, O lion among kings, let us both quickly proceed to our destination, go through the ceremony of consecration for the sacrifice, O king of kings, and conclude the sacrifice without any hitch or rub. ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल होकर शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। Filled with joy to hear the aforesaid request of the sage's son, Sunasep, the king of Ambrish, quickly reached the sacrificial enclosure, shaking off all lethargy. वहाँ सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनहसेब को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। Having bounded Sunasep, the sacrificial victim, with a cord of darbha grass, and thereby providing him with a distinctive mark of a victim and dressing him in a red attire, the king, who acted upon the advice of the supernaturalizing priest, firmly tied him to the sacrificial post. बंधे हुए मुनिपुत्र सुनसेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र यानी कि भगवान विष्णु, इन दोनों की देवताओं की यथावत स्तुति की। While remaining bound, the young hermit boy duly glorified indeed to two divinities, Indra and the younger brother Lord Vishnu, manifested as the divine dwarf by means of the excellent hymns. उस रहस्य भूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए
उस समय उन्होंने सुनसेव को दीर्घायु प्रदान की। propitiated through the mystic slams and filled with delight, Indra, the thousand-eyed divinity, thereupon granted the boon of long life to Sunasev that very moment. हे नरश्रेष्ठ, श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष प्रव इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। Neither said King Ambrish, according to the Govind Raja, an estimated commentator of the Ramayana, Ambrish is no other than the king Harshchandra, of whom a similar story is told in the भावरा ब्रह्मणा। यानी जो राजा अम्बरीश है वही हरिश्चंद्र है। Neither said King Ambrish too was well among men, duly attained, O Ram, the manifold fruit of the sacrifice yielded by the grace of Indra. The great ascetic Vishwamitra too, who is pity incarnate, began his austerities and knew in the vicinity of 3 lakes going by the name of Pushkar for another 1000 years, whose well among men. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विषष्टितम सर्गः समाप्त। Thus the end of Canto 62 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and oldest epic. Jai Sri Ram. नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. जय श्री राम, जय महाराज।